सोसाइटी, जहां देखने को मिली भक्ति और आस्था की एक अनूठी तस्वीर। वहीं ब्यूटीफुल डेकोरेशन, रिलीजियस प्रोग्राम और भजन कीर्तन के साथ कम्युनिटी सेलिब्रेटेड श्री कृष्ण जन्माष्टमी। चलिए हम भी शामिल होते हैं भक्ति और उल्लास के इस सेलिब्रेशन में। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की, आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की। विलेज जॉर्जिया अटलांटा में आयोजन हुआ एक सुंदर धार्मिक अनुष्ठान का, जो रहा ग्रैंड इनॉग्रेशन एंड ग्रांड प्रतिष्ठापन सेरेमनी ऑफ युगलकुंज। राधा माधव सोसाइटी द्वारा ऑर्गेनाइज इस इवेंट में हुए श्री कृष्ण जन्माष्टमी सेलिब्रेशंस भी। Today is the birthday of Lord Krishna, and we have all gathered here to inaugurate the beautiful deities that are placed right behind you, our Radha Krishna deities and our Ram Sita deities. No event is a single person's contribution. This event was put together with lots of help from the local community and volunteers from all over the US who are associated with this cause. We are excited to announce that we have started Gurukul classes. They will begin September 13th on Sundays from 10 a.m. to 12 p.m. We have 6 levels. We will begin with level 1 and 2, which is for age groups 5 through 8. We also have begun an organization called Harmony Youth Center, which is an opportunity for adults and youth where they'll get enriching programs such as Vedic math, Bollywood dancing, Indian vocal, as well as debate and writing and parenting workshops for adults. युगलकुंज के इनॉग्रेशन के अवसर पर उपस्थित रही दी फाउंडर ऑफ युगलकुंज सिद्धेश्वरी दीदी जी, जिन्होंने जन्माष्टमी के ओकेजन पर कम्युनिटी को दिया उपहार इस न्यू कम्युनिटी सेंटर के रूप में। And this has been a wonderful day so far. This is the third and the final day of inauguration. The first 2 days have been ecstatic. Everyone is very excited. Everyone is very happy, right from children to the elderly. And this is what the essence of Yugalkunj is. It's for people of all ages, people of all types, all religions. And it's going to be a place where it is a place where everyone is welcome to come and learn about God. That's the temple part. Learn about God, learn about spirituality, learn about devotion. And then we have the community center aspect of it, in which we will be using our wonderful premises, which have been beautified by the presence of God, beautiful deities of Radha Krishna and Sita Ram and Hanuman. We're going to be using these beautiful premises to promote Hindu culture, not only Hindu religion, not only spirituality, but also Hindu culture through various means, such as music, dance, and yoga. पूजा, हवन, कलश यात्रा, अभिषेकम और प्राण प्रतिष्ठापन जैसे कल्चरल प्रोग्राम्स ने अट्रैक्ट किया कम्युनिटी को। हर सेरेमनी रही स्पेशल और एक से बढ़कर एक, जिनमें पार्टिसिपेट कर खुश दिखी कम्युनिटी। Beautiful day. We have about 700 people came here to attend the Pran Pratishtha. We completed the Pran Pratishtha Mahotsav, and we are also having a lunch going on. Onwards, we are looking forward to have celebrations. जब मैं यहाँ पर आई तो it was amazing with like all temple and it's like so many things going on around right now. यहाँ आके मतलब मैं volunteer के लिए स्पेशल आई हूँ और यहाँ आके मतलब इतना अच्छा लगा, स्पेशली दीदी जी जब कीर्तन कराते थे साथ में पूजा के साथ। बाकी सब इतने बड़े हेल्पफुल है, so sweet here. अंदर से इतना अच्छा लग रहा है कि उस शब्द में एक्सप्लेन नहीं किया जाता। भजन कीर्तन और पूजा के बाद सबने लिया प्रसादम का लाभ और कृष्ण जन्मोत्सव के बहाने से साथ आकर कम्युनिटी ने डिस्प्ले की अपनी स्पिरिट ऑफ सेलिब्रेशन एंड लव फॉर इंडियन कल्चर। यूं ही धूमधाम